इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू इफ यू वांट अ नॉर्मल डिलीवरी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो ये 12 स्टेप्स फॉलो करें, और अगर आप इन स्टेप्स को रिगरसली रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड दैट यू विल हैव अ नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी। सो फर्स्ट थिंग इज डिक्रीज द स्ट्रेस। स्ट्रेस एंटी लेबर होता है। स्ट्रेस के टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे लेबर का प्रोग्रेस भी स्लो डाउन होता है, एज वेल एज जो पेन्स आते हैं दे डू नॉट गेट कन्वर्टेड इन अ गुड वे इनटू सर्वाइकल डायलिटेशन। ड्यूरिंग लेबर हम ये चाहते हैं आपको पेन्स आए, पेन्स के साथ बेबी का हेड नीचे जाए। जब हेड पेल्विस के अंदर जाता है देन इट कॉजेज सर्वाइकल डायलिटेशन। जब सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छा हो जाता है देन इट अलाउज द हेड टू डिसेंड अ लिटिल बिट मोर। सो स्ट्रेस इज डेफिनेटली प्रूवन टू बी एंटी लेबर. Decrease the amount of stress that you have. We agree that it is a little bit difficult, but do take the help of a birthing partner or have the help of your parents, your spouse. The second thing is foods. You have to have a healthy food, a healthy eating diet, a balanced diet in order to have a normal delivery. First thing is food rich in antioxidants. Antioxidants are present in a rainbow of fruits. Why am I telling you the rainbow? Different colors: orange, red, yellow, green. इस कलर की जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं दे हैव गॉट हाई कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विच आर गुड फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, गुड फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द लेबर. Second thing is decrease the amount of sugar. Sugar is going to increase your chances of having gestational diabetes. Pregnancy में diabetes होना बहुत common है इंडिया में. We are genetically prone to have diabetes. Diabetes के कारण ये सारा का सारा sugar, fat बेबी में भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण बेबी लार्ज फॉर जेस्टेशनल हो जाता है. अगर बेबी लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा ऑब्वियसली सेम पेल्विक साइज से उसे निकलने में डिफिकल्टी होगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वॉच अवर ओन वेट एज वेल एज द वेट ऑफ द बेबी. Third thing, you have to take foods and things that are rich in iron and protein. Iron किन चीजों में होता है? Green leafy vegetables, red colored fruits and good chana. Protein किस चीजों में होता है? They are mainly present in the poultry and the dairy products like milk, cheese, paneer, and your eggs and your curd. Third, एक्सरसाइज. एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होता है, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, आपकी पेन बियरिंग कैपेसिटी भी बिल्ड अप होती है, एज वेल एज यू आर एबल टू पुश बेटर. प्लस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली द पेल्विक एक्सरसाइजेस, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पेल्विक आउटलेट बाय ऑलमोस्ट 0.5 to 1 centimeter. This is the only dimension that we want at the time of labor so that the baby's head negotiates through the pelvic canal. इतने से ही डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ जाता है. आपका पेन जो आपको परसीव हो रहा है वो कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के चांसेस कम हो जाते हैं एंड फास्ट लेबर पेन प्रोग्रेस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इफ़ यू आर डूइंग अ पेल्विक एक्सरसाइज. सो यू हैव टू बी रियली रियली एक्टिव at the time of your pregnancy to have a better labor and better post-delivery outcome. Fourth thing for a healthy vaginal delivery is to be well aware of what goes on during the process of pregnancy, what goes on during the process of labor. अगर आप पहले से ही educated हैं, you will be able to understand the normal signs from the abnormal signs. कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत नॉर्मल होती हैं. वी डू अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड वी वांट यू टू लर्न इट. यू कैन लर्न इट बाय रीडिंग सम ऑफ द जर्नल्स, बुक्स. यू कैन ऑल्सो अटेंड द एंटीनेटल क्लासेस टू नो हाउ द प्रेगनेंसी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ लेबर, या फिर क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल लेबर के अंदर और सिजेरियन सेक्शन में, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज फॉल्स लेबर पेन्स फ्रॉम ट्रू लेबर पेन्स. Fifth thing, sleeping. Sleeping is a very important part of our life in general health. So obviously during pregnancy सोना बहुत ज़्यादा important है, but that does not definitely mean that you have to sleep throughout the day. Make sure that you take at least 8 hours of sleep during the night. कम से कम 8 घंटे की नींद रात को लेनी है और 2 घंटे की नींद डिपेंडिंग अपॉन योर पॉसिबिलिटीज आफ्टरनून में लेनी है. सो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट, कि वो बेबी की पोजिशनिंग के कारण या बैक एक के कारण या बेली के कारण वो नहीं सो पाते. तो आप क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर स्लीप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी और एडवांस प्रेगनेंसी? सो यू कैन रेस्ट इन द लेफ्ट लेटरल पोजिशन, बाई तरफ करवट करके सोइए एंड यूज 2 pillows. One of the pillows you can put below the level of your abdomen, your belly. The second one you can keep in between
between your two legs. एक pillow below the abdomen, second one in between the legs is going to help you balance the weight, and it is going to reduce the amount of stretch, the amount of pressure on your back muscles. आपकी back muscles कम दर्द करेंगे and you will be able to have a peaceful sleep. Second thing is to take small meals during the day. छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाइए, and do not take any kind of spicy, oily or high fat containing foods during the day, and especially during the nights. इससे क्या होगा, आपकी गैस्ट्राइटिस कम होगी. ज्यादातर पेशेंट्स जो हमें कंप्लेन करते हैं, दे आर लाइक कि सुबह तो हम ठीक होते हैं बट शाम होते होते तक हमारी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो इन केस अगर आपको डे टाइम में आप लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे, खाना खाने के बाद वॉक करेंगे, यू मेक श्योर दैट योर फूड गेट्स डाइजेस्टेड, तो रात तक आपका रिफ्लक्स इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर स्लीप. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज टू पिलोज. आप डबल पिलोज यूज कर सकते हैं. जब आपका पोजिशन एटलीस्ट 30 डिग्री टू 40 डिग्री फ्रॉम द सर्फेस होगा, देयर विल बी अ लेसर रिफ्लक्स, बट दिस इज अ सेकेंडरी थिंग टू डू. फर्स्ट थिंग इज टू वॉच आउट फॉर योर ईटिंग हैबिट्स. नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू मेक श्योर, आज के जमाने में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज टू नॉट go through a screen at least after 9 o'clock in the night. Make sure that you have got a very dim light in the room of yours, in the night room of yours, so that आपको अपना मोबाइल बार बार चेक ना करना पड़े. एंड इन केस इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू स्लीप, यू कैन हैव अ हैबिट ऑफ डेवलपिंग राइटिंग अ जर्नल और रीडिंग अ बुक एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, सो दैट योर माइंड डज नॉट वॉन्डर एट दैट आवर. अगर आपका माइंड वॉन्डर करेगा तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी. यू कैन ऑल्सो हैव अ वार्म वाटर बाथ एट द टाइम ऑफ नाइट, एंड यू कैन यूज oil in order to oil your head, oil your feet at the time of sleeping, so that you are able to relax in a better way. Sixth thing, develop a good relationship with your birthing partner. You have to discuss your concerns. आप अपना जो भी fears हैं, अपने concerns हैं, you might not be able to discuss them with your doctor or your healthcare provider, but you can discuss them with your partner. You both can read the journals together and come to a conclusion. उसके बाद जो भी questions आपके बचते हैं, seventh thing is to get in rapport with your OBGY and with your staff that is going to take care of you at the time of labor. So in case if you have any questions left, do just jot them down and ask your OBGY doctor कि ये मेरे concerns हैं and how we are going to deal with them at the time of labor. So the eighth thing is to know about painless labor. क्या होता है painless labor? किस पेशेंट को पेनलेस लेबर दिया जा सकता है और कौन देता है ये पेनलेस लेबर. सो अगर आपको पेनलेस लेबर या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में नॉलेज होगी, तभी आप उस चीज को ऑप्ट कर पाएंगे. सो देयर इज गोइंग टू बी अ वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू डिबंक द मिथ्स अबाउट द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, बट फॉर नाउ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बहुत ही सेफ होता है. बिफोर गोइंग इनटू लेबर, इट इज ऑलवेज गुड टू डिस्कस विद योर OBGY as well as your anesthetist regarding your fears about epidural analgesia and clear your doubts so that you can go for that. Ninth thing is to stay hydrated. Make sure that you have plenty of fluids. बहुत सारे fluids. You have to increase the amount of water or juices or soups that you take so that you stay well hydrated. आपकी muscles, they are going to develop that tangibility, that stretchability with the help of hydration. 10th thing, stay motivated. Keep chanting it within yourself that you will be able to do it. You are going to do it. You can also develop some sort of a music therapy so that you are able to cope up through the labor, or you can start listening to some sort of religious music, some sort of religious talks, so that you are able to stay motivated and hear those things out instead of wondering about whether you are going to have a normal delivery or not. Now 11th thing is to watch your weight. बहुत important होता है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको cravings होती हैं and they give in to those cravings. अगर आप अपनी cravings के फेवर में चले जाएंगे, then you are going to have problem regarding your weight, your baby's weight and weight loss post delivery, not to mention the n number of risk factors, n number of health problems that you are going to have at the time of pregnancy and labor. So you have to watch your weight. Keep you have to know what is your BMI. अगर आपका BMI कम है, then obviously you have got more margin. अगर आपका BMI एक average है, you can gain anywhere between 10 to 11 kgs, and अगर आपका BMI ज़्यादा है, then you only have 6 to 8 kgs of margins to gain during the labor, to gain during the pregnancy. Last but not the least, make sure that you are active,
during pregnancy. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, देर आर सर्टन सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो कि हर ट्राइमेस्टर में की जा सकती हैं, बट द क्रक्स ऑफ इट रिमेन्स दैट यू हैव टू बी एक्टिव एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोसेस. आस्क योर डॉक्टर, अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से, देन डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड देम, बट देर आर सम सर्टन सॉर्ट ऑफ लाइट एक्सरसाइजेज जो आप सभी ट्राइमेस्टर्स में कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू use this knowledge to your to your hearts out, and make sure that you are active throughout the pregnancy. Eat well, sleep well, talk well, stay motivated, stay hydrated, and most of all, stay positive. Choose a gynec who is going to give you very positive vibes so that you are able to go through this process in a smooth way. We are here to help you out, give the happiness of your life, the lifetime happiness, and make sure that you choose an environment which is good for you, which is adaptable for you, and which makes you happy, which gives you happiness. So that's it. Thank you.